हो रही है। पहले हमने ना लिस्टिंग को ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। एक वेरिएशन जो है, वेरिएंट जो है वो उसके अंदर ऐड हो गया, लेकिन दूसरा वेरिएंट जो है ना वो कहता है इनसफिशेंट है, ठीक है, मतलब कि कम है वो चीज़ें। तो अब हमने ना अमेज़न के साथ केस ओपन कर रहे हैं और कैटलॉग टीम के साथ कैसे हम बात करेंगे, तो उनको हमने क्या बोलना है और उनको हम किस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। चैट स्पॉट में जाके या कॉल स्पॉट पे जाके हाय। उसको एरर कोड उसे बताना है कि मुझे एरर कोड कौन सा आया, 8016 का आया है एरर कोड, 8016 का, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बैच आईडी बताते होते हैं जब भी कोई बात होती है उसके लाइक उसके रिलेटेड, सॉरी, फीड फाइल के रिलेटेड आपने क्या करना होता है, बैच आईडी उन्हें लाजमी देनी होती है ताकि वो ट्रबल शूट कर सकें। तो बैच आईडी दी, एरर कोड दिया, ठीक है। एरर कोड हमें क्या आ रहा था, वो कहता है जी प्रोडक्ट डाटा, वो कहता है इनसफिशेंट है, ठीक है। तो उस डाटा को आप क्या करो कि उसके अंदर अब हमने ना कंफर्म करना है कि कौन सा डाटा जो है वो इनसफिशेंट है, एज़ हमने सारी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इधर क्या ऐड किया, वो फ्लेवर एंड साइज़। अब हम देख लेते हैं, फ्लेवर हमारे पास ये है और साइज़ हम देख लेते हैं कि कहीं साइज़ तो नहीं हमने ऐड नहीं किया जिसकी वजह से ये इशू आया हुआ। साइज़ भी हमारे पास ऐड है, ठीक है, 12 ऑन्स पैक ऑफ 1 है। इसका हमने एसक्यू तो चेंज नहीं कर दिया था। हैं? इस लिस्टिंग का एसक्यू तो चेंज नहीं हो गया जो जिसकी वजह से ये नहीं ऐड हो रही। नहीं, कोई और इशू हो सकता है, इसका एसक्यू ही चेंज हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। फिर तो ये डिलीट करनी ना पड़ेगी। हाँ, और वो पुराने देखते वाला हैं। पता नहीं कौन सा था। नहीं नहीं पुराने अब तो न्यू रखेंगे, जो भी रखेंगे तो बन जाएगी। नहीं अभी नहीं, अभी फ़िलहाल जो है वो हमारी जो भी चीज़ बनी हुई ना, हम सिर्फ ट्रबल शूट करते हैं कि एक्चुअल में इशू क्या है, ठीक है। और उसके बाद 716 241 81 65 हमने उनको कॉल की, हमें कहा हमें कॉल करो, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब हम सिर्फ उन्हें बताया है कि ये इशू है, ठीक है। अब उनकी कॉल आएगी और हम उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ आपने अपनी फीड फाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है, जिसमें आपने उसे बताना है। कॉल आ चुकी है। पहले इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे Call तो आपसे from वो on पूछेगा कि Amazon. आपने फ़ौरन वन पे After this प्रेस call, कर you देना, may वो कहते receive हैं an आप to वन प्रेस accept, करें, press 1. एक्सेप्ट कॉल करनी है, ठीक है। वो कॉल कर रहे हैं तो हमने एक्सेप्ट कॉल करनी है। वन प्रेस कर दिया, वन प्रेस करने के बाद हमारे पास जो है वो अभी कोई कस वो आएगा सर्विस सपोर्ट वाला, उसको हमने हाई एल वाई करनी है। Hello, thank you for contacting Amazon Selling Partner Support. My name is Noemi. How can I help you today? Naomi, this is Amir here. Actually, my issue is regarding my variant that I am trying to add into a single parent. That my parent is already in my catalog, Mhm. but I am facing 8016 error. Can you please check the badge ID and troubleshoot with me accordingly? Request with this one. So are you using feed or file, a template? Yeah, feed file, through All feed right. file. Yeah. So just give, yeah, so just give expectations, sir, that this will be handled by our different department. All right. So let me just annotate the case and then I'll transfer the call over for further Okay. assistance. Okay. Okay, sure, no problem. All right. Kindly stand the line, sir. या आई Thank एम you. हियर। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि जब आपका केस जो होता है वो कैटलॉग टीम को जाता है तो कैटलॉग टीम के साथ हमें बात करनी होती है, ठीक है। अभी हमारे पास एक इशू चल रहा है जिसकी वजह से अभी हमारा केस जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र कर रही है। जब ये कॉल चालू हो ना तो प्लीज़ अपना म्यूट लगा दिया करें। Hi, thank you for calling Amazon Selling Partner Support. This is Faith. How can I help? Hi, this is Amir here. Actually, I am trying to add a variant, a child SQ into my parent.
and I am have been facing an issue 8016 error, and I have already shared a badge ID. Can you please check the badge ID and troubleshoot with me accordingly? All right, give me just a moment. Let me just open the batch ID that is provided. Yeah, sure. अभी फिलहाल वो चेक कर रही हैं और चेक करने के बाद जो है ना। Relationship. Okay, got it. All right. What's the variation theme of your Yeah, my variation theme is flavor and size. flavor and size? But I have already added the flavors and size attributes. What is your parent ASIN? Uh, Parent isn't just a moment, please. Have you already created a parent ASIN? I think so. We have created the parent ASIN through feed file 2 months ago. If I am not wrong, the parent ASIN is 7Z. Are these? Yeah. I'm sorry. Are the parent ASIN for these child ASINs that you have uploaded? Is it going to be under the same variation or no? Can you please come again? The feed file that you are uploading, is it for different variation family? Actually, the first station that is TL2. The first station, sorry, SDT is a different variant. Sorry, parent, and the other ASIN TL2 is different for the different parent. So if Okay. you So see, yeah, if yeah, you yeah. you have to create separate feed file if you are going to do um different family, because the system is recognizing your ASINs or your ASINs as one, and it don't have a parent ASIN here. So that's the reason why it's not you're receiving the error Uh, 8016. What I suggest you to do is that since you're only adding one child ASIN for each of the parents, if you can do it one by one using the edit listing on the parent itself on Seller Central. Yeah, I have already tried through manage inventory, and but there I have been faced an issue that your brand name is inconsistent, so we are unable to add the requested ASIN to existing parent. So we tried to upload the inventory file to add this SQ into existing Mhm. parent, like parent sq is, can you see please, variation family, variation flavor size, and the parent sq. And if you see, the parent sq is ptwbso dash 2.2 dash 12 ounce. Mm. One and moment. if i and if I delete the first row, like SSD2 that was successfully uploaded into the other parent. So Mm. let me try to requested uploads with the single SQ. Then what will be happen? Yeah, you may try to. I'm sorry. Per checking here, the brand name of both of the ASINs is Abbotsford Road. Is that right? Abbotsford Road for both Yes. of the Yeah, both of these ASINs. in, yeah, both of these in the same Okay. Abbotsford Road.
Okay, so yeah, what I suggest you to do is to add these child asins using if you want to use a feed file, you can do that, or you can use the variation wizard tool, which is you can just add one child asin and it will automatically create you a template. Have you tried using the variation wizard tool? I didn't use a variation wizard tool, but I think so. This feed file is downloaded. I think so. Many times ago, downloaded as Mm. from the wizard variation wizard tool. This is, I think so. This feed file is like a wizard file, if I am not wrong. Let me try. Let me try once and send you a Yeah. screenshot. Send you a screenshot of the error Yeah, through. you can use a variation wizard tool. You just have to look up the parent ASIN. Are you in front of your Seller Central right now? You know, I understand. I have been working as a catalog expert in my agency, so Oh, I see. uh, Okay. All right. Yeah, I highly suggest you to use the variation wizard tool and upload separate files for both of the variation families. yeah, okay. Just a moment, please. Variation wizard. For your information, I have Mm. already uploaded a new feed file with the one parent and one SQ. I think so. It's in progress. I will share the new Okay. badge ID. Can you also keep an eye on feed file badge ID 00678, the new badge ID that is in progress. Okay. I think it's already finished and it shows as successful. Mm, the second one or first one? Are you talking about first one? The recent feed upload that you created, where you uploaded just Okay, one child ASIN. I think so. You are, Yeah, it's yeah, successful. I think so. Um, your requested changes has been accepted. So let me check the ASIN into a manage inventory and let me check regarding is my ASIN has added into my variants or not. Just a moment, please. TNL2, yeah, Okay. it's added into my variation, but it's not showing into my it's not showing on front page. Can you also please check? Oh yeah, you have to wait first for up to 24 to 48 hours before it reflects. But give me just a moment. I'm going to check on the back end if it was successfully updated. So we can just wait just a moment. Yeah, okay, I'm waiting. Yeah. Okay. The parent ASIN for this child ASIN that you recently uploaded is the SQ ending in Yeah. 12OZ, right? Is that right? That dash 12 ounce. Are you asking about the SQ or ASIN? The SQ of the parent ASIN. It's the one ending in 12OZ, right? Yeah, 12 OZ. Right. Okay. And just a moment. Child ASIN is 12 OZ, right. CL2. Oh, yep. It's already successfully uploaded here on the back end. So we just have to wait up to 48 hours for it to reflect on the detail Okay. page. Okay. Okay, thank you. All I right. appreciate your support and troubleshoot, and thank you. Have a nice day. Thank you. Have a great day as well. Yeah. Thank you for calling Selling Yeah, Partner bye bye. Support. Bye for now. Bye bye. Bye bye. हाँ जी, अब इशू आपको अब यहाँ से ना देखें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीखते हैं। ठीक है, मैं कहीं के कोई चीज़ सीख के नहीं आया, ना मैंने कहीं से कुछ चीज़ सीखी है। ठीक है, मैंने सारा कुछ सीखा है तो सिर्फ ये ट्रबल शूटिंग से सीखा है। मैंने जितना भी चीज़ें सीखी हैं वो सिर्फ सिर्फ यूट्यूब से सीखा है।
कोई पर्सन ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे सिखाया, जिसने मैंने उससे सीखा, ठीक है। सारा कुछ एक्सप्लोरेशन पे होता है, सोल्यूशंस पे होता है। आप जब तक आप सोल्यूशन पर्सन नहीं हो ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैं आपको यही कहूँगा कि हम्म, आप ट्रबल शूट, आप सोल्यूशन ढूंढे ना यार, आप सोल्यूशन ढूंढे कि ऐड क्यों नहीं हो रही। और आपको ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कैटलॉग के अंदर हमेशा वही पर्सन सक्सेसफुल होता है जो सोल्यूशन वाला पर्सन हो, ठीक है। जब तक आप सोल्यूशन पर्सन नहीं हो तो आप कैटलॉग एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपके पास आपके माइंड होने चाहिए। अगर वही पर्सन, अब वो जिसके साथ मेरी बात हो रही थी, अगर वही मुझे ये कह देती कि भैया आप ना आप यहाँ जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, मैंने उसे डायरेक्टली बता दिया कि आई एम एन एक्सपर्ट इन कैटलॉग माई एजेंसी, ठीक है। और मैंने उसे बताया मैं कैटलॉग एक्सपर्ट हूँ मेरी एजेंसी के अंदर, लेकिन और वो चीज़ उसने फ़ौरन कहा, उसने उसने एक भी आगे से चूँ चाँ नहीं की कि यार भैया आप इस तरह करो, ये करो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। मैंने कहा मुझे आता है, मैं सारी चीज़ें पता है, तो आप मुझे सिर्फ एक हिंट दे दो। अब मुझे उसने हिंट दिया, मैंने दोबारा किया तो वो होगी अपलोड। तो ये जी। चीज़ें होती हैं, एक ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें करने में और बताने में और समझने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम के लिए आपने ये चीज़ों को ख्याल रखना है, ओके।